Hello friends, welcome back. Today we are going to begin with the study of human brain. As we know, brain is also called encephalon. Why encephalon? Because it is found in the head region, inside head and inside cephalon head. The brain is the main center of control and coordination, and it is basically a anterior enlarged bulge region of neural tube. तो न्यूरल ट्यूब जो सीएनएस का जो मेन कंपोनेंट है उसका एंटीरियर हिस्सा बल्ज रहता है. And being delicate and vital, it is protected inside the cranium, which we have studied along with the meninges. The brain of human is basically the vertebrate brain, and vertebrate brain जो है उसमें तीन parts होते हैं: fore brain, mid brain and what hind brain, which we are going to study in detail later. Now the study of brain is unique, and this study is called encephalology. Now this is the external view of the human brain, which is seen from the lateral side, and this is the internal structure of the human brain as seen by a cut section, sagittal section. Before going further, let's see how our human brain has evolved. A vertebrate brain has three parts: forebrain, midbrain, hindbrain. But in case of human, why we are so developed? Because of the brain. The forebrain of human is highly developed. If we compare, check: shark, fish, frog, amphibian, crocodile, bird, cat, you can see the brain is smaller as compared to the body, and the forebrain is less developed. But in case of human, the forebrain is highly developed, and because of that you can see human is the most evolved creature in this world. Hello friends, now let's see how our brain looks from the lateral side. So this is the view of the brain as seen from the lateral side. इसको lateral view of brain कहते हैं. In this lateral view, four major components are seen, or parts are seen. इसमें सबसे major है, which occupies almost 80% of the brain, उसको cerebrum कहते हैं. क्या कहते हैं? Cerebrum. So this entire you can see what structure जो आधे sphere के तरह दिख रहा है, hemisphere के तरह दिख रहा है, उसको cerebrum कहते हैं. On the posterior and ventral side, मतलब पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, there is second largest part of the brain, उसको cerebellum कहते हैं. It's also the major part of the brain. And mid ventral मतलब cerebellum के center में नीचे की तरफ there is a small swelling, इसको कहते हैं pons varolii. And pons varolii is extended into the most sensitive part of the brain called medulla oblongata. अगर इस part को इंजरी हो गया तो person can die. तो pons varolii and medulla oblongata इन दोनों को मिला के brain stem कहते हैं. Now the cerebrum and cerebellum, the surface अगर आप देख रहे हो तो it shows folds, and due to fold hill or depression जैसा दिखता है. The ridges are called gyri, जो hill like structure, and the depressions जो दिख रहे हैं उसको कहते हैं sulcus. अभी cerebrum और cerebellum के gyri और sulcus में फ़र्क है. Cerebrum shows irregular, you can see what folds, but cerebellum shows regular folds. The cerebrum अगर आप देख रहे हो तो इसको रफली हम लोगों ने चार लूप्स में डिवाइड किया है, एंड इट लूप्स आर डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस डीप डिप्रेशन जिनको सल्कस कहते हैं. ये हो गया सेंट्रल सल्कस, ये हो गया लैटरल सल्कस, ये हो गया ऑसिपिटो पैराइटल सल्कस, जो हमको बाद में स्टडी करना है. इन चार लूप्स के नाम है ये फ्रंटल, ये पैराइटल, ये ऑसिपिटल और ये लैटरल. नाउ ये सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, whereas cerebellum, pons, medulla oblongata is the part of the hindbrain. और midbrain जो है वो cerebrum के अंदर hidden है, तो we cannot see the midbrain from the lateral side. Externally हमको midbrain नहीं दिखता है. So in the lateral view you can see the four major parts: cerebrum, cerebellum, pons varolii, medulla oblongata. इन दोनों को मिला के brain stem कहते हैं. And this is the diagram which is given in a textbook, and you have to copy it, draw it and label the various parts. For the notes, you can copy the information. Hello friends, in the last video we have seen the lateral view of the brain. In lateral view, we can see only the major parts of the brain like cerebrum, cerebellum, pons and medulla oblongata. But apart from these four parts, brain has other parts also. But actually, our division of the brain is just like the vertebrate brain: forebrain, midbrain and hindbrain. But since human brain is highly developed, especially forebrain and hindbrain, and that's why it cannot be kept in the way it is arranged in the head of other animals.
तो ह्यूमन ब्रेन को फोल्ड करके रखा गया है इन द क्रेनियम. सो दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमन एंड दिस पार्ट इज द क्रेनियल स्पेस. तो स्पेस में ब्रेन को रखा हुआ है. ऑल्दो इन अदर एनिमल्स द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इज कंटिन्यूड एज स्पाइनल कॉर्ड. और ये तीनों पार्ट जो है दे आर केप्ट इन ए लीनियर फैशन, मतलब स्ट्रेट फैशन. ह्यूमन में फोर ब्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिड ब्रेन कहाँ पे है, हैंड ब्रेन कहाँ पे है. आई कैन जस्ट शो विद द हेल्प ऑफ पेन, जस्ट फॉलो इट. तो फोर ब्रेन का सबसे एंटीरियर पार्ट यह है ऑल्फैक्टरी लोब. दिस इज हियर. तो यहाँ से स्टार्ट होता है ऑल्फैक्टरी लोब. विद दिस मेजर पार्ट, दिस इज द सेरेब्रम. फिर ऐसा फोल्ड होगा. उसके बाद में दिस पार्ट इज द डायनसिफिलॉन, द थर्ड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. तो इतना मेजर रीजन जो है वो फोर ब्रेन ने ऑक्यूपाई किया है. उसके बाद में दिस पार्ट इज द मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ ह्यूमन. फिर यहाँ से हाइंड ब्रेन स्टार्ट होता है जिसका पहला पार्ट है सेरिब्रम, दूसरा पार्ट है पॉन्स, दिस इज द पॉन्स, एंड दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो इतना रीजन जो है यह है हाइंड ब्रेन विच इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन. And then medulla oblongata extends into the spinal cord. So students, so our human brain being very large as compared to other animals, it is kept in a folded condition in the head region. Now if you will straighten the human, अगर हम लोग हमारे ब्रेन को स्ट्रेट करेंगे जिस तरह अदर एनिमल्स में ब्रेन को स्ट्रेट रखा गया है इन द ब्रेन कैपेसिटी, then you can see the brain will look something like this. So this major part is the forebrain, this part is the midbrain, this part is the midbrain, and this part is the hindbrain. Hello friends, welcome back. Now let's continue to see the various parts of the brain according to the main division. The forebrain is made up of three main parts. The first part is the anterior olfactory lobe. This is olfactory lobe. This is the center of smell, and it's connected to the second part of the brain, which is the largest part of the brain called cerebrum, with the help of olfactory stalk. Now, in case of human, olfactory lobe is less developed, but cerebrum is highly developed. Now, the outer region of the cerebrum is folded into gyri and what? Sulcus. So, gyri is the elevation and sulcus is the depression. Also, the outer region of the entire brain except medulla oblongata is the gray, and the inner layer is what? White. The outer layer is also called cortex, inner layer is also called what? Medulla. The cerebrum is divided into two halves. The left cerebral hemisphere and right is connected with the help of a tissue called corpus callosum. Below cerebrum lies the part which is exactly the center of the brain. That's why it's called diencephalon. It's made up of upper part called epithalamus, lower part called thalamus, and middle part thalamus, and the lower part called hypothalamus. Now the forebrain is connected to the hindbrain with the help of a tract. This tract को कहते हैं crura cerebri, और on the two lateral side of the crura cerebri are four lobes, चार lobes है. इसको कहते हैं corpora quadrigemina. Corpora में the body, quadra मतलब four, gemina मतलब united. इसमें से ये ब्लू वाला जो दिख रहा है इसको कहते हैं एंटीरियर कॉलिकुलाई, जो आई मूवमेंट्स को कंट्रोल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है. एंड द ब्लू वाला है उसको कहते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई, जो ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है. उसके बारे में डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे. तो हैंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम विच हैज़ गॉन रेगुलर फोल्ड्स, और अंदर ट्री जैसा ब्रांच दिखता है उसको कहते हैं आर्बोर विटे. देन यू गॉट पॉन्स विच इज स्मॉल बल्ज, एंड द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल मेडुला ऑब्लोंगेटा. और मेडुला ऑब्लोंगेटा को इसके लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रे मैटर वाइट और वाइट मैटर ग्रे हो जाता है. और दैट्स वाई स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ होता है वाइट मैटर और अंदर की तरफ होता है ग्रे मैटर. इन द एंटायर ब्रेन देयर इज अ होलो स्पेस. सो फोर मेजर होलो स्पेसेस, उसमें से दो है लेफ्ट और राइट सेरिब्रम के अंदर. फिर थर्ड वेंट्रिकल जो है वो है डायनसेफेलम के अंदर, और द फोर्थ वेंट्रिकल है वो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर है. हेलो फ्रेंड्स, so this was the diagram as if the brain is kept in a straight manner, but since our brain is well developed, having more volume, it is actually kept in a folded condition
So this is actually how this previous you can see parts are arranged. This is the एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑल्फैक्टरी लोब, यहाँ से ये सेरिब्रम है, फिर ये है डाइनसेफेलन पार्ट, ये है मिड ब्रेन, ये सेरिब्रम, ये पॉन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा. मतलब ऑलमोस्ट दिस रीजन इज फोर ब्रेन, दिस पार्ट इज मिड ब्रेन एंड दिस पार्ट इज व्हाट हाइंड ब्रेन. So this is a chart of various parts of the brain. You can copy it for your kind reference. Now let's see the various functions of the brain. The forebrain is made up of olfactory lobe, which is the center of smell. Then cerebrum is the largest part of the brain. All the voluntary actions are controlled by this part. Sensation is controlled by this part. Then corpus callosum connects the two hemispheres. Then the interior region of the cerebrum has a motor control. Hippocampus controls the memory and emotions. Cerebral cortex, the outer region of the cerebrum, has different intellectual functions, memory, decisions and others. We will discuss later. The diencephalon is the relay center for all the you can see connections. It has thalamus, epithalamus, hypothalamus. The most important part is hypothalamus, which not only controls the visceral organs but also is connected to endocrine system with the help of pituitary. It is the center of thirst, hunger, emotions, even temperature. Now midbrain connects the forebrain and hindbrain with the help of crura cerebri, and it has got four lobes collectively called as corpora quadrigemina, which control the reflexes of eyes and ears, especially the head movement. The superior colliculi for eye and inferior colliculi for ears. तो हाइंड ब्रेन का सेरिब्रम जो है सेरिबेलम, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट, बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर. इसके लिए इफ इट इज डैमेज द बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर इज ऑल्सो डिस्टर्ब. वन पॉन्स वेरोली forms the reticular activating system, which is the nerve tract and also has vital visceral control. And medulla oblongata is the most sensitive part of the brain because it has got the reflex centers and also the vital centers like heartbeat and breathing. So any injury in the medulla oblongata, can lead to sudden death. So you can copy this chart for your reference and study. We'll meet next time.